Hello students, myself Mushir Ahmed. Now today I am going to teach you another topic in civics class 10th, and the topic is economic growth and the development. Now let's start the comparison between the democracy and dictatorship with the context of economic growth and development. Dictatorship have slightly higher rate of economic growth. If we talk about economic growth is slightly higher in dictatorship comparison. If we compared with democracies, economic growth is higher in dictatorship in comparison to democracies. But there is a several factors responsible for that. Economic development depends on several factors. Economic development mainly depends on several factors like country's population. It means the size of country's populations depend of their economic development. And the second scenario and the second factor, global situation of a country. It means country's position. It means country's global situations depend of economic development. For example, in ancient India trade relationship established with Mesopotamia and other countries through their significant position. Cooperation from other countries, that is the another factor of economic development. Cooperations from other countries cooperate with you. It's depend on economic development. Economic priorities adopted by the countries, and the most important factors is economic priorities adopted by the countries. It means what step taken by the country for their economic development. For example, India take initiative in 1991 when Prime Minister Narasimha Rao and the Finance Minister Manmohan Singh decided to India's domestic market open for foreign investor. It means we adopt globalization process. We open our domestic market for foreign investors. Why? Because of that, we need foreign investment for our economic development. Also providing jobs opportunities. Why? Because of that, we are unable to provide jobs to our youth. So that is the priority of policies adopted by the government. On that time, it means Narasimha Rao government decided to adopt economic liberalization policy in 1991. So it is a huge policy change, and it is a very economic priorities. It means government set up the economic priorities for the economic development of our country. Now the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. It is very slightly and negligible. It means very minimum difference between the economic development between the less developed countries and the developed countries. We cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we cannot say that democracy is a guarantee of economic development. No. Why? Because of that, you know that economic growth
is higher in a dictatorship. So we cannot say that democracy is a guarantee of economic development. No, not at all. Why? Because of that, it's a pattern of government. You can say that in democracy, so many channels passed out, policy making passed through so many channels. That's why policy making is a long process and delayed policy making process in a democracy. But in a dictatorship, there only one person is responsible for formation of policy. So it is work is more faster in comparison with democracies. When we find significant differences in the rates of economic growth between dictatorship and democratic countries, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. There is only one benefit in dictatorship, that economic growth is slightly higher. But in other platform, if we talk about other outcomes of democracy, in dictatorships we have got negative outcome. So ultimately democracy is better platform to provide economic development of a country. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं क्लास 10th में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये माना जाता है कि डिक्टेटरशिप जहां पर है वहां पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, आर्थिक वृद्धि जिसको कहते हैं वो ज्यादा है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट आता है, सारी चीजें आती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी मिल रहा है, हेल्थ सर्विसेज भी इम्प्रूव हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंट्री का इम्प्रूव हो रहा है, फॉरेन ट्रेड भी डेवलप कर रहा है। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उस वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री की जो पॉपुलेशन साइज है उस पर डिपेंड करता है। भाई इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर रहे हैं। ग्लोबल सिचुएशन यानी इंडिया की पोजीशन क्या है, किसी कंट्री की ग्लोबल पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पर सिचुएटेड है, यह भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री का उसके साथ किस तरीके का कोऑपरेशन है, यह भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर कोऑपरेशन नहीं है तो वह उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकता क्या होगी। हम जान रहे हैं कि 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में ये चीज़ें डिसाइड की गई कि इंडिया अपने वहाँ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक रूप से हम विदेशी कंपनियों को अपने वहाँ इनवाइट करेंगे, यानी अपना घरेलू बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? क्योंकि हम अपने स्तर पर अपने लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस लेवल की कैपेसिटी नहीं है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम पूंजी आकर्षित करेंगे बाहर की कंट्री से। इसीलिए हमने अपना डोमेस्टिक और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ आज की डेट में इंडिया में। आज आप देख रहे हैं दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपकी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये इसीलिए कर रही है क्योंकि आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उभरते हुए बाजार हैं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है। आप सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन भी आपकी कंट्री में है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब डिफरेंस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट्स है डेवलप्ड कंट्रीज और डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज, difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship बहुत negligible, it means नगण्य है, बहुत कम है। ऐसा नहीं कहा जाता कि बहुत ज़्यादा फर्क है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि डेमोक्रेसी इस बात की गारंटी देता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके कई चैनल्स होते हैं, कई चैनल्स से पास होकर कोई पॉलिसी बनती है, इसमें समय लगता है, निर्णय तेजी से नहीं हो पाता, यह एक सेटबैक है डेमोक्रेसी का। बट हम गारंटी नहीं मान सकते कि डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएगा ही। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है इकोनॉमिक रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन डिक्टेरियल एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जिसको हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी का पॉजिटिव आउटकम है। ये हम मानते हैं कि डिसीजन मेकिंग में कुछ डिले होता है, बट इससे आप ओवरऑल ये नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सिर्फ डिक्टेटरशिप में ही होता है, डेमोक्रेसीज में नहीं होता है। So now that is the topic, economic growth and development.